भी उनके हमरा होंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी दौरे सऊदीया में मुतवक्किल है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं हुई। नवाज लीग ने इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से भी अभी किसी जमात से मुशावरत नहीं की। नवाज लीग पंजाब समेत तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबी इत्तेहाद भी करेगी या नहीं, ये फैसला अभी नहीं हुआ। एक बार फिर से आपको खबर देंगे कि इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ खुर्रम इंसारी। उनसे मज़ीद जानेंगे। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, इस मुतालिक बारिश शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की थी कि आज से 8 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो गर्मी का जोर था 2 से 3 रोज हमने देखा कि ईद वाले दिन से लेकर और आज तक काफी ज्यादा गर्मी थी। उस गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात की इस पेशगोई के बाद NDMA ने भी जो मुतलका इदारे हैं उनको एहतियाती तदाबीर के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं और मानसून के सिलसिले के दौरान ये भी कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिशें होंगी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है NDMA ने मुतलका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। जी ठीक है, हिदायत जारी कर दी गई हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। खुर्रम अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। नाम तो बताओ अपना। क्यों बताऊं? आज तुम नाम पूछ रहे हो, फिर कल मेरा नंबर मांगोगे तो दे देना नंबर। क्यों दूंगी मैं नंबर आपको अपना? क्योंकि तू एक जमादार है, जमादार, और जमादार गरीब होता है और गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। मुझे कश्मीर जाने का बड़ा शौक है। ऐसे सब कहते हैं कि जाना जैसा लगता है। कितने पैसे चाहिए होते हैं कश्मीर जाने के लिए? दरअसल मुझे इसी वाली ट्रेन में जाना है। बिना इसी वाले के मैं जाऊंगी तो फिर तो हालत ही बुरी हो जानी है। ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हम टीवी एंड हम न्यूज़। एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Willing to do so. This is important because, as we all know, it is the tough times that allow you to recognize your true friends. So 2013, while we celebrate 10 years of CPEC, was a very difficult year for us. I was also new in government then. To have China step up in 2013, none of this existed. This hall, this converter station, I'm also fortunate because I visited some weeks ago the Matiari end of the transmission line also, is to have this sense that at that time, 10 years ago, when none of this was here, that two of our leaders, Nawaz Sharif and Xi Jinping, had that vision that we have to take Pakistan forward. And at that time, China stepped up and the leadership of His Excellency President Xi Jinping, who committed China to this, rather at that time, the Belt and Road Initiative was just a Belt and Road Initiative. It didn't have any energy component. So it was Prime Minister Nawaz Sharif's advocacy that Pakistan was short of energy and we needed not just generation, important part, but the transmission also of that energy. So thus CPEC took shape, took nearly 2 years for it to be signed. But by grace of Allah Almighty and the leadership of our two leaders, it finally began in 2015, and we all stand here today to celebrate the 1,000 days of successful operation
of this 660 kV high voltage direct current line. If people were wondering what HVDC means, it's because essentially the electricity that is generated is converted into direct current sent across the country, and then it is converted at the other end again to be used in our houses, in our factories, in our industries, in our commercial areas. So it's we are here to acknowledge the iron brotherhood of our great friend China, which has made this push forward into Pakistan's what we hope will be a better economic future for the people of this country. I'm also delighted that in my current responsibility as Minister for Energy and in the leadership of Mohammad Shahbaz Sharif as Prime Minister, we have completed the unfinished agenda of CPEC over the last year. Mr. Shahbaz Sharif as Prime Minister inaugurated the Karot electric hydro project. He inaugurated both the Thal Nova and the TEL projects, and of course one of the key projects of Pakistan's future, the Shanghai Electric 1320 megawatt Thar coal powered plant, which is at the moment the biggest demonstration that we have that Thar coal is feasible, Thar coal is usable, and Thar coal will be a fountain of Pakistan's future energy generation. So Shanghai Electric, alhamdulillah, now is also in operation. I look at the numbers every day. It's working well. And also, I've had this final remark in English before I switch to Urdu. I've had this privilege of watching this China-Pakistan economic partnership and iron brotherhood. As I said, I've seen it in the extreme south of the countries, the southeast where the Shanghai Electric is located, and I've seen it in the mountains in Sukhi Kinari, where I went to see lay the foundation stone for the transmission line. So if the question that is asked is that, you know, where is China-Pakistan friendship? Ladies and gentlemen, we are here to celebrate 886 kilometers of China-Pakistan friendship. This is what this project represents. And the reason I say this is it is a commitment by China into the future of Pakistan is because as CPEC was being developed, the south of the country, the areas near Karachi, in Thar, in Port Qasim, is becoming more and more important as an electricity generation area. One of the things that were also built, which should not go unmentioned, are the K2 and K3 nuclear power plants, which have now become a foundation, again, a very important foundation for Pakistan electricity generation. They are now one of our base loads that we run all year, every day. And if one of them goes offline for repairs, I get a fever because I want them to run every day, every hour. So it's so the future is that as the South becomes more important, सीपैक पर काम नवाज शरीफ के दौर में हुआ। 10 साल पहले पाकिस्तान और चीन ने सीपैक पर काम का आगाज़ किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि चीन उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था जब कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा